Good afternoon, friends. Hope so you all are good. Okay, as in last classes we have started chapter metals and non-metals, and mostly we have covered this chapter. Our last topic is pending. Okay, I am going to recap how many topics we covered. Firstly, we studied about the physical properties of the metals. Secondly, we studied about the physical properties of non-metals. Next, we study about the chemical properties of metals, and we study about the chemical properties of non-metals, reactivity series, uses of metals, uses of non-metals, differences between metals and non-metals on the basis of physical properties and chemical properties. And after that, we study about how ions are formed, or you can say how ionic compounds are formed. We study about all the methods of ionic compounds are formed. Okay, next we study about what are ionic compounds and what are the properties of ionic compounds. Okay, the last topic that we have started, extraction of metals. The extraction of metals, meaning how we can extract metals, from their ore and mineral. In last class we cleared up what is ore and what is mineral, what are the differences between ore and mineral. So in the activity series we studied what we divided metals into three parts. One is highly reactive metals, second is medium reactive, last is low reactive metals. Okay, now for all these three groups of metals we need different methods for the extraction, and in last classes we have covered two methods. Firstly, extraction method for the metals of high reactivity, meaning the metals who are high reactive. We use for the extraction of these metals electrolysis process. In electrolysis process we study about all the process, how cathode anode electrodes work, how sodium chloride ore can be purified into sodium. Okay, and I told you this is only one method in which we can get pure method via single step. We don't need any other step without the electrolysis. Okay, without the electrolysis we don't need any other step. So we directly get pure metal from the electrolysis process. So this is all about how we can extract the high reactive metals, okay, from their ores. In next class we have studied that how we can extract medium reactive metals. In case of medium reactive metals, the ore may be present in carbonate form, sulfide form or oxide form. We can easily extract any metal from the oxide ore as compared to carbonate and sulfide ore, and for that we have to convert carbonate ore and sulfide ore into ore of oxide or oxide ore of metal firstly. So for that we studied what two processes. One is calcination, the second one is calcination, the second one is roasting. वैसे calcination meaning क्या था? Calcination क्या था? The conversion of carbonate ore like zinc carbonate ZnCO3 into oxide. Now what is the method of the conversion? When we heat zinc carbonate, or you can say the zinc carbonate, in the absence of air it produces the product of zinc oxide plus carbon dioxide. In case of roasting, as the oxygen is available, oxygen is present. In presence of the oxygen, when we heat sulfide ore, in presence of oxygen, zinc oxide plus sulfur dioxide gas is formed, and in both cases we get oxide form of ore, meaning oxide form of metal ore. And after that, when we get the oxide form of the metal ore, we directly undergo it reduction. Reduction meaning we heat metal under any reducing agent, in the presence of any reducing agent, and we use a reducing agent carbon, or you can say coke. Okay, in the presence of carbon, when we reduce any metal oxide, we get pure metal, meaning we have used two processes. Firstly we convert carbonate sulfide ore into oxides,
and after that from the oxides we get the pure metal. Clear is it? So these two methods we have covered in the last classes. Today we are going to cover last topic, metals of low reactivity. How we can extract low reactive metals from their ores. What is the process? Firstly, Rajesh, the metals that have low reactivity are present in the sulfide ore form. And sulfide ore form meaning it undergoes roasting. In case of sulfide ore, we always use the process roasting. Roasting meaning क्या होता है हमारे पास in the presence of oxygen. We heat the metal in the presence of oxygen. हमारे पास क्या जाएगा? आगे हम देखते हैं पूरी डिटेल में जो प्रोसेस आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. हाँ जी, extraction of metals of low reactivity series. How we can extract them? The metals which are low in activity series can be reduced to the metals by heating in the presence of oxygen. Presence of oxygen meaning roasting. We use a scientific term for it. Okay, for example, अब मैं किसकी example लेकर पूरे का पूरा process explain करूँगी. Mercury. जैसे now the name of the ore you have to learn. Mercury की कौन सी ore use कर रहे हैं? HGS. Mercury sulfide. लेकिन the scientific name is Canamar. Okay. Why heating? How we obtained mercury from the Canamar? Why heating in the presence of oxygen? किसकी presence में heat कर रहे हैं? In the presence of oxygen. When it is heated in the presence of oxygen, what we get? It firstly converted into mercuric oxide. It's converted into mercuric oxide, meaning HgO, mercuric oxide. And on further heating, it is reduced to mercury. जैसे इस mercuric acid को when we further heat, it changed into the mercury. Okay, it changed into the mercury. Now what is mercury? Mercury is a metal. Clear is it? Now mercury is a metal. So what we get? Mercury. Meaning firstly हमने उस सल्फाइड को हीट किया under the roasting. After that उसे थोड़ा सा और हीट किया तो हमारे पास क्या आ गया? मर्क्यूरी. अब आप बोलोगे मैम जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज वाले थे उनमें आपने हीट क्यों नहीं किया? भाई आप उनमें भी हीट कर देते मेटल. लेकिन रजे उस केस में मेटल्स थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है. वो क्या है, हमें उसके लिए क्या है, एक रिडक्शनल और एक हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ा. अदरवाइज उनकी रिएक्शन हो ही नहीं रही थी, मेटल्स हम ऑब्टेन कर ही नहीं रहे थे ना. सो डिफरेंस है ना रिएक्टिविटी सीरीज़ का. इसके कारण क्या है, हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं. सेकेंड हमने कॉपर की एग्जांपल ले रही. कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कैसे किया हमने? कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन हीट किया, देन इट चेंज्ड इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड और साथ में हमारे पास क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गई. और अब उसी क्यूप्रिक ऑक्साइड को हमने उसी प्रोडक्ट को हमने और ज़्यादा क्या है, हीट किया. सेम प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट चेंज नहीं किया. व्हेन वी हीट इट अगेन एंड व्हेन वी हीट इट मोर, प्रोवाइड मोर हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट चेंज्ड इनटू कॉपर फॉर्म. इट चेंज्ड इनटू कॉपर मेटल. सो व्हाट इज आवर पर्पस? फॉर टू एक्सट्रैक्ट मेटल. एंड इन these cases we extract metal after further heating of the product, or you can say oxide form. When we heat further oxide form, we get metal. Okay, so this is our main motive. We have to obtain metal, or we have to extract metal from its oxide, or you can say from its ore, and we done it. Okay, Rajesh, so this is all about the extraction of metal. This topic is important. Okay, and next Rajesh, which और थोड़ा सा आपको शो कर देती हूँ. Now what is the refining of metals? रिफाइनिंग मीनिंग क्या होता है? रिफाइनिंग आप सभी ने रिफाइनिंग इंडस्ट्री सुनी होंगी ना. रिफाइनिंग मीनिंग क्या होता है? जैसे रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज. एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक इन लास्ट क्लासेस आई टेल यू व्हाट वी कॉल इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? ज्ञान. आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ डेफिनेशंस कराई थी. व्हाट वी कॉल इम्प्योरिटीज? वी कॉल देम ज्ञान. Okay, the removal of impurities from the metal to obtain pure metal is called refining of the metals. अब आप बोलोगे अब भाई से इम्प्योरिटी वाला क्या आ गया? जैसे बताती हूँ. मैंने एक ही केस में बोला था कि मैंने प्योर मेटल ऑब्टेन कर ली, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. बाकी के दोनों केसेस में तो मैंने बोला ही नहीं कि मेटल प्योर है.
मेटल क्या है हमारे पास, impure form में है, it have some impurities attached with that. So how we can pure that metal? We use the refining process. Refining of metals meaning removal of the impurities from the metal to obtain pure metal. Okay, Razik, how refining takes place? The most common method for the refining is the electrolytic refining. Is the electrolytic refining. So what we do in this method, already हमें electrolysis study किया है, इसका पूरा experiment setup हमें clear है. कौन कौन सा experiment setup है, जिसमें electrode use कर रहे हैं as a cathode and anode. But इधर मैंने impure copper का एक मान लो, I have to pure copper metal. इधर मैंने impure copper as a anode ली है and एक pure copper as a cathode ली है. In this I have a solution of copper sulfate. कॉपर सल्फेट तो समझते हो, सॉल्ट है आपके पास. तो एंड उसके बाद प्रोसेस क्या होगा, एक बार आप पूरा स्टडी करोगे. कहते हैं इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर अ ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर इज मेड एज एनोड. उस ब्लॉक को हमने क्या बनाया, एनोड. एंड देन अ थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर मीनिंग एक प्योर मेटल की शीट को हमने कैसे रख लिया, एज अ कैथोड. मेटल्स आर एज अ कैथोड. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट is acidified copper sulfate solution when electric current passes through the electrolyte. जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो जो हमारे पास क्या है, प्योर कॉपर है, from the anode is deposited at a cathode and the impurities settled down as anode mud. तो जो हमारे पास impure है, जैसे it has anode ना, it has anode meaning it has negative charge. It has negative charge, but copper metal always have positive charge. Metals are electropositive na. Then the pure copper from this comes to this road and deposited on this road. Meaning we get the pure metal, other impurities get settled on. So this is all about how we can refine the metals. This is one example of copper. You can also so many examples in your book. So with this topic we have completed chapter metals and non-metals. This जो last topic हम अब किया है हमने metals, extraction of metals. This topic is cut done by the CBSE board due to the reduction of 30% syllabus. But it will be useful for you for your further entrance exams, or you can say for the basic knowledge. जितने आपके एंट्रेंस एग्जाम आएंगे ना, वहाँ पे क्या है, और वगैरह पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. इसीलिए मेरे को लगा कि एक बार क्लियर कर देना चाहिए. हमने कौन सा ज़्यादा दिन लिए हैं, 2-3 दिन में कवर हो गया. बट ऐसा नहीं है कि आपका कोई टॉपिक स्किप हो जाए, क्योंकि साइंस और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आज हमने आपको जो सिलेबस लेफ्ट है ना वो छुड़वा दिया, कल आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो सिलेबस लेफ्ट ना हो, दैन बट सो यू हैव टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट. कोई भी चैप्टर है जो हम स्किप कर रहे हैं ना, आप अपनी ओर से स्ट्रेस पाओगे, हमें एक बार तो कवर करवा दें. नो डाउट आप इस टॉपिक पे स्ट्रेस मत दो, क्योंकि हमें पता है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस. बट रजे यू हैव टू रीड इट वंस and you have to clear the concepts of this topic also. Okay, thank you. Hope so you all understand it. If you face any problem you can tell us.